Hello, all Capricorn people. Welcome to my reading. I'll be doing a reading based on Archangel Michael's Sword of Light Oracle deck. It's a deck of 44 cards. You can see it as a sun sign, as a moon sign, and as an ascendant sign or rising sign, also we say. So, all these three signs are validating enough, so you can do as per the need, as per your need. So this is a weekly reading that I'm doing for this current week, present week. So hope you take it as a guidance, as a positive guidance, because the messages are from Archangel Michael's Oracle deck. So he's always guiding you through his messages. He's conveying you the guidance through his messages. So let's start with your reading. I'll shuffle the cards first. I'll pick up 3 cards as 3 messages from Archangel Michael. I'll pick up 3 cards. So those 3 messages will be for you, Capricorn people. Take it as a guidance, as a positive guidance for this week. Card number 1, card number 2, card number 3. Okay, so these are the 3 cards which I've picked up for you based on Archangel Michael's Oracle deck. I'll explain it further. The prediction is on. Card number 1, this is a blessing in disguise. This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. If you're having any such doubts in your life, कभी कभी होता है हम लोग के लाइफ में, हम लोग कुछ कर बैठते हैं या करते हैं तो उस पर डाउट होता है कि मेरे साथ ये जो हुआ या मैंने जो किया वो सही नहीं हुआ. तो ये इसको आप ऐसे मत सोचिए, ऐसा सोचिए कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. जो आपके साथ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ, आपके भले के लिए हुआ. सो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता या नज़र में नहीं आता, सब कुछ साफ नहीं रहता है आंखों के सामने. कभी कभी कुछ हिडन भी रहता है, उसका हिडन मीनिंग रहता है. सो this was a card of blessing in disguise for the Capricorn people. So be patient, have faith. Your angels are having this situation under control. उन पे भरोसा कीजिए, एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा कीजिए. आप अगर विश्वास नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में तो भी विश्वास करना शुरू कीजिए. Have faith. Have faith in yourself, have faith in the universe. Because angels have this situation, rather your situation, under control. What will come, जो आएगा आगे वो बहुत 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 उम्दा होगा, बहुत बेहतर होगा. It is far better than you have dared to dream. आप जितना सोच भी नहीं पाए उससे काफ़ी बढ़िया होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा. So have patience. So this was all about card number 1. Here comes card number 2. Angels of healing are with you. Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. Archangel Michael आपका strength enhance कर रहा है. They are healing you certainly. अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, कोई भी सफ़रिंग, मेंटल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो वो आपका दर्द ज़रूर हील कर रहे हैं. आपको शायद पता नहीं चल रहा है लेकिन धीरे धीरे आप हील हो जाओगे. दिस इज़ द ग्रीन लाइट, द ग्रीन ऑरा दैट यू कैन सी. सो इट्स अ वेरी हीलिंग लाइट, अ वेरी पावरफुल हीलिंग लाइट. सो यू आर बीइंग हील्ड. Trust the universe, trust the universal process.
have patience, have faith. So you will be healed because they are in the process of healing you. A time of healing is about to bless your life. So don't worry. Card number 3. You are ready for more. This is card number 3 for Capricorn people. You are ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. So maybe आप अपने लाइफ में जितना अचीव किए हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या नॉन मटेरियलिस्टिक हो, आप शायद खुश हैं उससे. तो your career is growing and blossoming. You're happy with that. So you're ready. It means what? You're ready for more. अभी जितने पोजीशन में आप हैं उससे आप खुश हैं, लेकिन शायद आप और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं. So now is the time you are ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. आप जो सोच रहे थे कि चेंजेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, अपना काम में और उम्दा पोजीशन डेजिग्नेशन हासिल करेंगे. सो नाउ इज़ द टाइम बिकॉज एज पर द यूनिवर्सल गाइडेंस द यूनिवर्स इज सेइंग यू आर रेडी फॉर मोर नाउ. ऐसा नहीं है कि आपसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला नहीं जाएगा. आप बिल्कुल संभाल सकते हैं इसे बिकॉज यू हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी नाउ within yourself. You have the confidence within yourself now. So you are ready for more mentally, emotionally, physically, spiritually, हर तरीके से. So now is the time to make the changes that you have been contemplating. जो आप सोच रहे थे इतने दिन से, उस बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं. This is the guidance from the universe, from the spirit guide Archangel Michael. So this was all about your reading, Capricorn. Hope you have a guidance for this week. Take it positively and wish you all the very best to improve your life. Thank you so much. Namaste. See you in my next reading.